All right, in the meantime, let's move on now and talk about the Russian President, Vladimir Putin, who seems to be hailing the Prime Minister's program of Make in India. And Make in Russia is something that a push is now being made and has been talked about by the Russian president. Because here Putin seems to be saying and suggesting that we should actually learn from Bharat, and Prime Minister Modi is doing the right thing. Now, this is a big call, as he's been praising Prime Minister Narendra Modi's promotion of Make in India program, where the Russian president has highlighted the importance of using domestically made products and commended India's policies under the leadership of Prime Minister Narendra Modi as a positive example. तो एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जहां तक मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव है, जहां तक जितनी कोशिश की जाए अपनी ही देश में डोमेस्टिकली ग्रोन और इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं तो अपनी देश को आप किस तरह से एक ग्रोथ साइकिल, एक ग्रोथ ट्रैक पर रख पाएंगे, उसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन. Well, back in the 90s, there were not too many cars available. Now we have those cars. Well, probably they are somewhat modest compared to Mercedes or Audi that were only being procured in the 90s in huge numbers. But I guess in this regard, we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. So this statement that has been made by the Russian president, this was at the 8th Eastern Economic Forum, where Vladimir Putin has said that we do not have domestically made cars then, but we do now. And it is true that they look more modest than a Mercedes or an Audi, which we brought in vast amounts back in the 1990s. But I think that is not the issue. I think we should emulate many of our partners, for example, in India. तो भारत का example देते हुए नजर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगर बात करें, स्वाति, जिस तरह से सराहना करिए, प्रेस करिए मेक इन इंडिया की जो प्रमोशन की भारत में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही एग्जाम्पल रूस में भी अप्लाई किया जाए. बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये, और आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल एंडोर्समेंट पुतिन के जरिए मिल रहा है. सबसे पहले प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात की थी कि जो भारत में बनी हुई चीजें हैं उसका आप ज्यादातर इस्तेमाल कीजिए. उसके बाद उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पुश की बात की, और आज पुतिन उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जैसे भारत में बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करता है और प्रधानमंत्री उसे एंडोर्स करते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका है. हमें भी रशिया में बनी हुई चीजें, खासतौर पर वो व्हीकल्स का, गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे कि जो रशिया में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमें उसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए. तो आप कह लीजिए वोकल फॉर लोकल या प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया कॉल, मेक इन इंडिया पुश, अब पुतिन को भी रास आ रहा है. Even he seems to be endorsing that. Right, Swati, thanks very much for the update. So the Russian Prime Minister seems to be hailing the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Let's